वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अच्छे से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, मेहरबानी आपका टाइम देने के लिए आज। We are pleased to inform you today's 6th General Annual Meeting of Ecotourism Society is being conducted at Hotel Regenta at Central Point at Srinagar. Agenda for meeting: we will start by President's address, annual administrative report for the year 2023. Hello. I hope I'm audible. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. I'm very thankful that आप लोग यहाँ पे बहुत short notice पे आए हैं, because हमने जो venue कल रात को है change किया, because after this AGM we're having some dignitaries joining us immediately. That's why हमने exactly 2:30 बजे time को respect करते हुए, आपके time को respect करते हुए, we started the AGM exactly on time. So I will be reading out the annual general meeting report for जो हमने पिछले एक साल में काम किए हैं, इको टूरिज्म में जो काम किए हैं, उसकी आपको मैं थोड़ा सा highlights बता देता हूँ what exactly we have done. Dear members, it's my great honor and privilege to address you at the 6th annual general meeting of Ecotourism Society of Kashmir. Today we gather to reflect on the journey, celebrate our achievements, and the chart the course of an event, brighter future. Our collective mission has been to promote responsible tourism and develop the picturesque region of Kashmir. And this gathering is the testament for the achievements that we have done. The Ecotourism Society of Kashmir, as a pillar of Kashmir's tourism industry, united a diverse and vibrant community of hoteliers, homestay owners, travel agents, service providers. जो हमारे members हैं जनाब इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर के, हमारे पास होटलियर्स हमारे मेंबर्स हैं, हाउस बोट ओनर्स मेंबर्स हैं, वी हैव ट्रैवल एजेंट्स आर मेंबर्स एंड अलाइड सर्विस प्रोवाइडर्स आर मेंबर्स. सो हम अपने आप को एक मिनी चेंबर ऑफ टूरिज्म बुलाते हैं, बिकॉज टूरिज्म के जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी टूरिज्म से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमारे मेंबर्स हैं. Our achievements, I'll just give you key highlights of our achievement जो हमने करा है. First of all, we have a privilege of engaging with the Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji during his visit in Srinagar, advocating for initiatives like opening taxi permits, which created employment of hundreds of people in just 30 days, within 30 days. Janab Amit Shah ji यहाँ आए थे Home Minister, and Ecotourism Society जो है, one of the youngest, or I would say newest, 2018 में we came into existence, just within a span of 4 years of our existence. Out of 25 associations in Kashmir, Ecotourism Society was invited to be a part of 5 people group. Manzoor Sahab वहाँ पे थे to meet Amit Shah, Shri Home Minister at that time, even right now he's a Home Minister. तो वहाँ पे Ecotourism Society को represent मैं कर रहा था, तो I advocated on taxi permits opening के लिए. It was a very good discussion, around 30 seconds or 1 minute discussion was कम, बहुत कम था, time था. Immediately after 1 week, I got a call from Home Ministry talking to me that this Transport Commissioner of Srinagar, Jammu and Kashmir, will call you regarding taxi permits. हमने decide किया कि taxi permits हम खोल देंगे कश्मीर में, और अगर कोई भी problem है, कोई भी issue आता है, just let me know. So there was a deliberation happened. बहुत सारी चीजें हैं. उन्होंने बोला 2.5 लाख रुपए एक permit का रेट देंगे. Where I deliberated and I said no. 5,000 है, आप हमें 10,000 ले लीजिए, 15,000 ले लीजिए. Then he told me, eventually the discussion happened like this कि कश्मीर में he said कि अगर जमीन आसमान पे पड़ता टैक्सी परमिट्स नहीं खुलते. रीजन थिंग इज 15 डिपार्टमेंट्स की एनओसी चाहिए थी. ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोल रहा था ट्रैफिक का मैनेज नहीं कर पाएंगे. म्युनिसिपैलिटी वाज सेइंग वी डोंट हैव पार्किंग फॉर दीस कार्स. सो ही सेड यू स्पोक टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, एंड द क्रेडिट गोज टू इकोटूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर. Collaborative discussions with the Department of Tourism in different policy matters. We have had different deliberations. Ecotourism, within a short span of 3 or 4 years, we were just recognized by the Department of Tourism. जो भी meetings Department of Tourism की होती है, उसमें Ecotourism part होता है, हमें invitations आ जाती हैं. And even जो policy recent amendments की policy की,
टूरिज्म पॉलिसी में जो अमेंडमेंट्स थी, मंजूर साहब विद माई सेल्फ वी वर पार्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, KCCI हो या CCI के हो, हमने वहाँ पे जाके अपनी फीडबैक्स दिए एंड इको टूरिज्म सोसाइटी कश्मीर ने एक हमने कंट्रीब्यूट करा उस पॉलिसी के रिप्लाई में, और हमने अलग से अपने एसोसिएशन की तरफ से, सोसाइटी की तरफ अलग से एक इंडिविजुअल रिप्लाई भी दिया, जिसमें हमने होटल्स की बात करी, जिसमें हमने हाउस बोट्स की बात करी, स्पेशली जो एक्सोर्बिटेंटली हाई रेट्स उन्होंने दिए थे रिन्यूएबल की, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब माशाल्लाह शफी साहब हमारे, आई जस्ट मूव फॉरवर्ड, उसके बारे में आगे कुछ लाइंस में जिक्र करूंगा। That has been amended, that वो टैक्सी वगैरह That is with टैक्सी नहीं, ये जो ट्रैवल एजेंसी की अमेंडमेंट हो गई सर, अपनी अभी नहीं हुई, वो उसके बाद इलेक्शंस हुए, इट्स स्टिल इन द पाइपलाइन। ओके, विद द सेक्रेटरी टूरिज्म हमने बहुत सारी मीटिंग्स करी आबिद रशीद के साथ, a number of meetings were done. Additionally, our society organized an impactful event, cleanliness drives at Khajwas Glacier. हमने जो खाजवास ग्लेशियर में क्लीननेस ड्राइव कंडक्ट करी थी, one of the biggest drives. We did a Gulmarg conclave where more than 100 stakeholders, hoteliers, prominent Khyber हो, आपको कोई भी हो, they were part of that. I think मंजूर साहब भी वहाँ थे मीटिंग में, बहुत सारे एसोसिएशन हेड्स थे. One of the biggest conclaves we did in Gulmarg. In Sonam Pahalgam also we did a very big conclave. हाजी साहब, हबीब साहब हमारे साथ थे, शफी साहब हमारे साथ थे, मंजूर साहब हमारे साथ थे. अगेन वहाँ पर भी करीबन 50-60 लोग हमारे साथ थे, which were all different hoteliers and stakeholders, prominent hoteliers were there. Also, we had a privilege of conducting similar kind of drive at Sonamurg also. तो मकसद इन ड्राइव्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स का यही है कि हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को जनाब प्रमोट करें, बिकॉज हमको ये समझना चाहिए कि कश्मीर में टूरिज्म है दैट रिवॉल्व्स अराउंड नेचर. अगर हमारे पास बर्फ नहीं पड़ी, बारिश नहीं पड़ी, क्लाइमेटिक चेंज उस हिसाब से नहीं हुआ जिसके लिए कश्मीर फेमस है, all the investments are in the way. Okay, now these efforts are not only promoting ecotourism but also strengthening the community participation in environmental stewardship. I am looking forward. I ensure that we will move forward with the agenda, with the perspective, or I would say with the issues and concerns that our members have. Our members are open to write it to us, email हमें कीजिएगा, WhatsApp पे हमें आप connect कर सकते हैं, whatever your concerns are, we will follow proper agenda for it and we will move forward the same thing to the authorities. आज यहाँ पे मैं जनाब एक, sorry I'm going ex tempo, I don't want to read from the paper. आज यहाँ पे मैं announcement करना चाहता हूँ that in accordance to the Constitution of Jammu Ecotourism Society of Kashmir, clause number 9, we have designated Muhammad Shafi Wangnu Saab appointed as the convener for the year 2024-26. A huge round of applause. And I'm confident that under his leadership we will reach the heights and we will get a better representation at the government offices, government forums and government places as well. And I extend my deepest gratitude to my office bearers. I'm sorry, हमारे treasurer, he had some medical emergency, he was not present here, otherwise he had to be here present today. So my secretary, I would like to thank, and all the members, ये association, ये membership या ये जो हम consortium बना रहे हैं, this is not possible until unless आप सबका साथ नहीं है. And we are open for membership, not like other associations in the market. We don't want to confine. I want ecotourism to have minimum 1,000 members in next 2 or 3 years. It's open for all. Let's make it as big as possible. Let's make it a mini chamber of tourism so that हमारी बात सुन पाए authorities and we can be vocal about it. Thank you so much. And I will just hand over the mic to my secretary now. I just missed it out. I would now request our convener Muhammad Shafi Wangnu Saab to read out his address. Huge round of applause, please. Assalamu alaikum everybody and good afternoon. I am truly honored to serve you as convener of Ecotourism Society of Kashmir for the term 2024-2026. I accept this responsibility with deep gratitude and a firm commitment in promoting a responsible tourism in Jammu and Kashmir. I assure all members
that I will carry out my duties in full alignment with the society's commitment, with dedication and teamwork. I aim to advance sustainable tourism while upholding the values of environmental care and cultural preservation of our beautiful valley. Together, let us channel our energy and shared vision towards fostering eco-friendly tourism that benefits our environment, communities, and future generations. I believe that with unity and determination, we can achieve significant milestones in making ecotourism a pillar of development in our region. I sincerely thank office bearers, executive committee, and all members for trusting me with this role. It's a privilege to work alongside you, and I look forward to achieving our goals together. And I assure you, inshallah, with the grace of God and your support, we will make it one of the best and top ranking associations in Kashmir. That is my commitment to you all. And there won't be a one-man show like other associations. We'll be part like a family. Thank you. Thank you so much, Shafiq Sahab, for your lovely words and inspiring speech. To my secretary to read out the accounts report. The next point of agenda stands financial report presented by the Honorable Treasurer. Though the Honorable Treasurer is not available today due to some unavailable circumstances, so I'll read the financial statement instructions, so he has sent it with that. So the total amount we have received out of the subscriptions is 1,35,000 rupees. And out of that, we have spent 75,000 rupees in our green energy drives, events, convocations, and other things, which includes transportations, printing materials, and all those things. The current balance of cash in hand stands 60,000 rupees. Any questions for that? Yes, we do have a bank account. Sir, we have a bank. I'll just add up here. So basically, हमेशा एक चीज़ है कि हर एक एसोसिएशन में हमें नए मेंबर्स भी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस बंदे भी चाहिए. Because without experienced people, associations would not run. So as I have worked under the leadership of Manzoor Saab, Shafiq Saab के साथ भी काम किया, तो थोड़ा सीखा हमने how the association culture and how everything runs. Just for the information of our members, 75% of our members are unique members of ecotourism society. वो किसी और एसोसिएशन के मेंबर नहीं है. तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को इकोटूरिज्म को तरजीह देनी है, वो चाहे ना चाहे, बिकॉज वी आर यूनिक मेंबर्स. हम 10 एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं हैं, नंबर 1. नंबर 2, हमारे पास एक चंक ऑफ एक्सपीरियंस फॉर भी है, जैसे मजूर साहब और बहुत सारे बाकी मेंबर्स हैं जो हमें हमेशा गाइड करते रहेंगे हाउ टू रन इट फॉरवर्ड. एंड ऑल्सो हमारा शेयर्ड विजन ये है कि वी प्रिपेयर नेक्स्ट लेग ऑफ लीडर्स. कल ऐसा नहीं है कि हम चेयर पे हैं, हम चाहेंगे हम आप में से कोई यहाँ पे बैठे. सो दैट इज व्हाट आवर विजन इज ऑल अबाउट. अभी आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, फराज जी है, बुरहान भाई है, बहुत सारे. सो दे आर पार्ट ऑफ आवर, वी हैव गॉट सब कमिटीज. हमने हमारे पास सब कमिटी है, टूरिज्म सब कमिटी है, एनवायरमेंटल सब कमिटी है. बहुत सारे लोग अभी हमें ज्वाइन करेंगे जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ मेंबरशिप बेस ऑफ 125 मेंबर्स, बट स्टिल इट्स इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग डे. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Regarding the accounts, we have a bank account and we have got expenses that occur every second day, every now and then. But again, कोई भी organization है financial stability के बगैर चलेगी नहीं. So we have to ensure that we pay off our AMF every time so that we can represent our members to the authorities. Any other question? The next point of agenda stands to consider resolutions passed by the managing committee. So that are already 24 and 26, 2 years. So the resolution is already been passed.
So next point agenda is vote of thanks. Before I tell you, before I present vote of thanks, let me tell you one thing, sir. हर एक एसोसिएशन पहले छोटी होती है, फिर बड़ी होती रहती है, और उसमें चेंजेस आते रहती हैं. I am not part of, I'm just a simple member of Chamber of Commerce. और परसों मैं बैठा था वहाँ पे, और उसमें मैंने ये देखा कि महाराजा की फैमिली से भी वहाँ पे प्रेसिडेंट्स थे. It's very old, before the independence of Jammu and Kashmir, even independence of India, उससे पहले बनी है वो. और उसके वहाँ पे सुनने में आया कि पहले 10 साल का तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है वहाँ पे, उसके बाद का रिकॉर्ड है उनके पास. सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लग रहा है 6 सालों में हम इतने बड़े हुए हैं कि वी हैव गॉट the hall is almost full, which is an honor for all the members, and I would like members to give themselves a round of applause for this. Thank you so much everyone for making your presence certain here today on this occasion. We have wrapped up quickly. पहली बार हमने आपको कॉपीज इसलिए नहीं दी है because we promote responsible tourism. तो उसका पहला बात है कि हमको पेपर यूज नहीं करना है. Let's read out from our hearts. Let's not follow that old tradition of reading out and all these things. अपने दिल से बोलेंगे, भाइयों से बात करेंगे, कोई कंसर्न्स है, we can talk about it. तो वो चीज़ इंशाल्लाह आगे भी हम फॉलो करेंगे. We will not use papers. Inshallah next time we have a projector wherein we can project all the works that we have done. So आगे जाके इंशाल्लाह will become bigger. The association is अल्हम्दुलिल्लाह इको टूरिज्म का नाम अभी की डेट में आप कंफर्म कर सकते हैं, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यहाँ पे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो. इवन इको टूरिज्म हैज गॉट number of invitations in Delhi. I have myself attended conferences there. I have attended conclaves there where ecotourism was given chance to speak on the podium, where we have given chance to present a presentation out there. So which is an honor for us. None of the associations out of so बहुत सारी पुरानी associations उनको नहीं बुलाया गया. And I, with honor I am saying कि ecotourism was called there. ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है. ये एक अकेले मेरे चलने से कुछ नहीं होगा. So I need all the support from everyone. और आपको ये सारा support अभी शफी साहब को ट्रांसफर करना पड़ेगा for the progress of the association. That's the one thing. और अभी I would request the members to stay back. Okay? We have got a small selfie booth outside. आधे घंटे का टाइम हमारे पास है because we'll be having dignitaries coming in who are going to participate us. And before the dignitaries come, we have membership certificates to be presented to all of you because we want to wrap it up and हमारा time, आपका time बहुत important है. We don't want long AGMs for full day whereas members ही बहुत थक जाते हैं. So I will request my team to please help me out with this, and I think if the hotel people can share this table, यहाँ पे हम अच्छे से certificate दे सकते हैं. Just give us 2 minutes. Can you please clear this table from here?